फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है. कैन यू सी द बोर्ड? Female reproductive cycle में what we are going to study today is we are going to study the hormonal control. We are going to study the impact of the various hormones. Can you see the board? We are going to study the impact of various hormones, and in these hormones we have many hormones. We have pituitary hormones, we have ovarian hormones. ठीक है, write it down. Write it down. We have hormones from the pituitary gland. ठीक है, so we have various hormones. We have the pituitary hormones. We have the ovarian hormones, which are going to function in this, and this is a very important question बेटा, और ये बोर्ड में इस दफा आया था, फर्स्ट एनुअल में ये सवाल आया था. ठीक है, we have the pituitary hormones, we have the ovarian hormones, फिर we have the follicular hormones. We have the follicular hormones. Follicular hormones जो हैं, ये अब आप देखें कि this is the group of hormones. बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाएंगे, कोई जल्दी नहीं है. हमारा कोर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे से जा रहा है. ठीक है, बिल्कुल सुकून से पढ़ेंगे. If you want me to repeat something, do tell me. I will repeat it many times as you want. ठीक है, follicular hormones हैं, ovarian hormones हैं, pituitary hormones. So now we have three groups of hormones that are impacting on the female reproductive system. फिर उसके अंदर आपके पास चेंजेस कहां पर आ रही हैं? आपके पास आ रही हैं ओवेरियन चेंजेस. ठीक है, ओवेरियन चेंजेस आ रही हैं, या ओवेरियन साइकिल आ रहा है. आपके पास यूटेराइन साइकिल आ रहा है. यूटेराइन साइकिल आ रहा है बिकॉज यू नो कि चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द ओवरीज, चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द यूट्रस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल. ठीक है, so we have different phases. We have ovarian phases, we have uterine phases. ठीक है, which are all going to be under the impact of these hormones, and then during the reproductive cycle, which is known as the menstrual cycle. ठीक है, ये एक पहली बात आ गई. The female reproductive cycle is also known as the menstrual cycle. ठीक है, the female reproductive cycle, it has an impact on the blood consistency. It has an impact on the blood presence of hormones. The percentage of hormones that is present inside the blood वो भी variate करता है, क्योंकि आपको पता है कि hormone system, these are ductless glands. They do not have ducts. ठीक है, and because they are ductless glands, their secretions are absorbed inside the blood, and then they are transported to different parts of the body via blood, and they reach their site of action. ठीक है, site of action में ये फिर पहुंचते हैं. लेकिन क्या है, because they are present in blood, so what happens, इनकी वजह से blood के अंदर जो concentration of hormones जो है वो क्या होता है, वो up down हो रहा होता है. अब आप ये चीज ध्यान में रखें. Let me go to the slide now. फिर उसके बाद वापस विल कम टू द बोर्ड अगेन. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की स्लाइड, आई एम गोइंग टू शेयर द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्लाइड. कैन यू सी द स्लाइड? फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, it is also a feedback mechanism which is operating inside the body. The control of the female reproductive cycle is also a type of a feedback mechanism. Write it down. ठीक है, it is also a type of a feedback mechanism in which concentration of hormones की वजह से आपके पास different hormones की concentration, different hormones की secretion जो है वो क्या हो रही है, वो control होती है. Now the female reproductive cycle. What is involved in the female reproductive cycle? First of all, look at the organs. ठीक है, look at the structures that are going to be involved. First of all, इसमें जिस चीज के बारे में we have to know that are going to play the role, write it down in your notebooks. आपके पास है hypothalamus, pituitary. These are the glands and these are the structures that are going to be involved. Hypothalamus है, pituitary है, ovary है. ठीक है, ovary के अंदर follicles हैं. ठीक है, और फिर क्या है, फिर uterus है. These are the main body parts which are going to play their role in operating the female reproductive system. First of all, the hypothalamus
it secretes gonadotropin releasing hormone. This gonadotropin releasing hormone, it activates the first part of the pituitary gland, the anterior part of the pituitary gland. ये सारे notes आगे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको आप लिखते भी जाइए. It जो है activates the first part of the pituitary gland, which is called the anterior lobe of the pituitary gland. This is the anterior lobe, which is secretory in nature. The posterior lobe of the pituitary gland, it is of a storage nature. ठीक है, तो anterior lobe जो है, it is going to be activated. It is going to produce two hormones, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. फिलहाल detail हम इसकी कल करेंगे. At present, only names को याद रखिए. Follicle stimulating hormone, luteinizing hormone are going to be produced by the anterior pituitary under the impact of the gonadotropin releasing hormone, which is produced by the hypothalamus. Now, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone क्या है? They are going to have a general impact on the ovary. Detail of impact कल करेंगे. सिर्फ ये ध्यान में रखें कि which hormone is going to have an impact on which part. ठीक है, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone is going to have an impact on the ovary. Inside the ovary, some changes are going to take place, which we will study in the next lecture, and this is going to produce another hormone, which is estrogen. Now, estrogen beta, इसके साथ लिखिए, this is an ovarian hormone. It is produced by the ovary. It is an ovarian hormone. ठीक है, it is produced under the impact of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. All these hormones are working on the mechanism of feedback. ठीक है, तो estrogen will be produced from the ovaries. Ovary में कौन से हिस्से में बनता है? Detail पढ़ेंगे. Estrogen helps in egg maturation. And then luteinizing hormone and estrogen, they help in ovulation. Ovulation का मतलब लिख लीजिए. Ovulation का मतलब है release of the ovum, release of the egg. एक तो ये function है. दूसरा function क्या है? The estrogen starts to build up the uterus lining. Uterine lining में कौन से वाली lining? Endometrium. Endometrium. Endometrium को ये line build up करता है. ठीक है, endometrium को build up करता है. Now, after the egg is released from the follicle will be converted into this yellow structure, which is called the corpus luteum. And this corpus luteum is going to produce another hormone, which is called progesterone. Now, all these hormones, they are cutting down the effect of each other. ठीक है, progesterone. Estrogen has already built up the initial uterus lining. Progesterone क्या करेगा? Progesterone is going to enhance the building up. It is going to increase the number of glands. It is going to thicken the lining of the uterus now. ठीक है, and progesterone is the main hormone that maintains the pregnancy if fertilization has taken place. Now, if pregnancy is has not occurred, then what happens? The corpus luteum will break down and the progesterone level drops and the uterus is going to break down and the menstruation is going to start. ठीक है, next हमारे पास क्या है? अगर तो if pregnancy has taken place. If pregnancy has taken place, then what is going to happen? The egg is fertilized. Human chorionic gonadotropin is going to be produced by the chorionic villi. We have studied this in chapter development and aging. I will discuss it again tomorrow. This HCG, human chorionic gonadotropin, helps to maintain the corpus luteum. And then what happens? It keeps on producing progesterone. It maintains the uterine lining till when? Until when the placenta is settled. जब तक के placenta बन नहीं जाता, तब तक के HCG is going to maintain the corpus luteum, which is produced from the human chorionic gonadotropin. अब हम ये देखते हैं, आपको मैं बोर्ड की तरफ वापस लेके जाती हूँ. Let us go to the board. अब आपको मैंने क्या बताना है? अब आपको मैंने ये बताना है कि phases
ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है? इस दफा जो क्वेश्चन आया था बेटा वो ये था कि व्हाट राइट अ नोट ऑन द मेन फेजेस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में बेटा जनरली द मेन जो बड़ी बड़ी फेजेस हैं वो आपके पास क्या हैं? वो आपके पास 4 हैं। कुछ बुक्स में 3 हैं, कुछ बुक्स में 4 हैं, ठीक है। लेकिन आप अपनी बुक को जब देखेंगे तो आपके बुक के अंदर उन्होंने जो सेंट्रल फेज है उसको उन्होंने जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा बनाया है। तो यहाँ पर अब आप देखते हैं कि आपके पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर जो चेंजेस हैं, द फर्स्ट फेज ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इज द मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि why is it called the first phase. And these phases have been divided due to the presence of hormones, due to the activity of hormones, due to the nature of changes that are taking place during these phases. इसकी बुनियाद पर आपको 3 different phases जो हैं, you will be able to see them in your book. The first one is the menstrual phase. ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर भी आपके पास डिफरेंट फेजेस हैं, लेकिन वो हम कल करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल लेट मी टेल यू द मेन बड़ी बड़ी फेजेस के बारे में आपको मैं बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको बाकी जो है ना वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। फर्स्ट इज द मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर आपके पास डिफरेंट चेंजेस आते हैं, हार्मोन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, फॉलिकल मैच्योरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर द मेंस्ट्रुअल फेज द नेक्स्ट फेज जो है वो क्या है? दैट इज द प्रोलिफरेटरी फेज। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो क्या है? याद रखिए इस बात को कि प्रोलिफरेटिव फेज जो है, व्हाट इज इट? प्रोलिफरेटिव फेज जो है, इट इज दैट फेज इन व्हिच प्रोलिफरेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन, increase in the number of cells, increase in some kind of deposition, that is called the proliferatory phase. ठीक है, inside the proliferatory phase आप देखें कि आपके पास different impact of hormones जो है it is taking place as compared to the menstrual phase. ठीक है, menstrual phase के अंदर जो है अलग किस्म के हार्मोन इम्पैक्ट है, proliferatory phase में another type of impact is taking place. ठीक है, नंबर ऑफ डेज भी आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फेज है व्हिच इज द सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज जो है वो क्या है? सिक्रीटरी फेज इज द मेन फेज इन व्हिच द यूट्रस इज गोइंग टू बी बिल्ट अप। इसके अंदर हार्मोनल इम्पैक्ट डिफरेंट है। Now these phases जो हैं they have totally different hormonal impacts on the uterus. They have totally different behavior of the ovaries and the follicles and the uterus in them. ठीक है, इसकी वजह से इनको हमने डिफरेंट फेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। इन फेजेस के ऊपर बेटा यू कैन एक्सपेक्ट लॉन्ग क्वेश्चंस। दिस टाइम इन द फर्स्ट एनुअल वी हैड अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव फेजेस एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डिड वेरी वेल, बिकॉज ये बहुत अच्छा और बहुत अप टू द पॉइंट के सवाल होता है। इसमें इफ यू हैव लर्नड इट प्रॉपर्ली then you will not be able, it is possible that you will not make any mistake. और ये मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी और ये आपको बिल्कुल ऐसे टू द पॉइंट पक्का होगा विदाउट एनी मिस्टेक। ठीक है, अब क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर आपके पास छोटी छोटी फेजेस दूसरी हैं। प्रोलिफरेटिव फेज में अपनी फेजेस हैं, मेजर चेंजेस हैं जो टेक प्लेस during it, and secretory phase. The main phases of the female reproductive cycle: number 1 menstrual phase, number 2 proliferatory phase, number 3 secretory phase. These phases have been created due to the different concentration of hormones. ठीक है, due to the different concentration of hormones, due to the different activities that are taking place inside the ovaries and inside the ovaries and inside the uterus. ठीक है, the different changes that are occurring inside the follicles. ठीक है, and then the nature of hormones that are being secreted, and then one most important thing is the concentration of the hormones inside the blood. ठीक है, आप किसी फीमेल का ब्लड टेस्ट कर लें तो आपको पता चल जाता है अकॉर्डिंग टू द
percentage of hormones that are present inside her blood, you can get a very good idea which stage of the reproductive cycle is she passing from. Menstrual phase में हार्मोनल जो कंसंट्रेशंस होती हैं वो बिल्कुल देर ना होने के बराबर होती हैं. प्रोलिफरेटरी फेज के अंदर एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है. एंड सेक्रेटरी फेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन सबसे ज्यादा होता है. प्रोलिफरेटरी में इनिशियली आपके पास जो है FSH एंड LH है, फिर आपके पास एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा है. नाउ नंबर ऑफ डेज भी डिफरेंट है. फर्स्ट 5 days, नंबर 1 day to number 5 day is the menstrual phase, जिसको के आप समझते हैं कि that is the end. Menstrual phase is actually the start of the reproductive cycle. कैसे, ये मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये बहुत डिटेल का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है. अच्छा जी, फिर उसके बाद menstrual phase 5 days का menstrual phase है, किसी में थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता है. फिर proliferatory phase, which is also called the pre-ovulatory phase. It is also called the pre-ovulatory phase. Pre-ovulatory phase का मतलब है, एक मिनट हम लिख देती हूँ यहाँ पर. Pre-ovulatory phase का मतलब है pre-ovulatory. Pre-ovulatory का मतलब है before the release of the egg. All the changes that are going to take place will be included in the proliferatory phase. All the changes जो कि होंगी इनको हम कहते हैं pre-ovulatory phase, ठीक है. ये हो गया. Then after the release of the egg, the stage that is going to start, that is the secretory phase, ठीक है. The pre-ovulatory phase or the proliferatory phase, it lasts for day 5 to 14, and then the secretory phase, it lasts from the day 14 to the day 28. The average reproductive cycle of a female is about 28 days, ठीक है. 28 days का फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है और उसके अंदर ये तीनों फेजेस जो हैं ये डिवाइडेड हैं, ठीक है. अब आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन जरूर पूछें.